Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope everybody is fine and blessed. Today our session is very important. A language learning process we are going to share with you, discuss with you, in which we will discuss the language skills basically, which is very important to sequence the language skills. Learning language ko jab you want to learn, then it is very important that you must keep in mind the sequence of the language skills. If you will ignore the language skills sequence, definitely you will lose the language learning process. ये इतना इम्पोर्टेंट है. अगर किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज स्किल्स का जो सीक्वेंस है कि लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जाता है, रिसीव किया जाता है और प्रोड्यूस करना है, तब जाके मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी. आइदर इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, उर्दू, वट एवर द लैंग्वेज इज़, यू मस्ट कीप इन माइंड एज अ सीक्वेंस टू लर्न द लैंग्वेज. अगर आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड अडॉप्ट अ सर्टेन सीक्वेंस, जिसमें लैंग्वेज स्किल्स जो है उसमें दो स्किल्स पर आते हैं विच मस्ट बी नो. एक इनपुट स्किल्स हैं, रिसेप्टिव स्किल्स हैं जिनको हम कहते हैं, और एक प्रोडक्टिव स्किल्स हैं जिसे आउटपुट स्किल्स भी हम कहते हैं. तो इनपुट स्किल्स जिसके थ्रू लैंग्वेज को हमने रिसीव करना है, जिससे लैंग्वेज को अपने अंदर जहन में बैठाना है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके मीनिंग को, उसके यूज़ को, ठीक है, और उसके बाद उसकी किस सिचुएशन में उसको यूज़ करना है. ऑल दैट मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव्ड. तो रिसीव किस स्किल से होगी लैंग्वेज जो है, दैट इज़ फ्रॉम लिसनिंग एज वेल एज फ्रॉम द रीडिंग. लिसनिंग और रीडिंग स्किल दो ऐसे स्किल्स हैं, अगर आपको लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, वट एवर द लैंग्वेज, यू मस्ट कंसनट्रेट ऑन द रिसेप्टिव स्किल्स और इनपुट स्किल्स, जिसमें लिसनिंग और रीडिंग आती है. तो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग स्किल इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड स्किल. ये भी मैं आपको बता दूँ. जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हो रही, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन द क्लासरूम्स, वी इग्नोर द लिसनिंग स्किल्स, and the maximum share in the language learning is listening skill. basically listening skill का maximum share है किसी भी language को सीखने का, improve करने का. first listen, then perform. so listening is the foremost skill in the receptive skills. you must listen the target language. English language को, English words को, sentences को, meanings को, use को, vocabulary को, first listen carefully. और उनका वेयर अबाउट्स यू मस्ट डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल. वो आपके कॉग्निशन में, आपके जहन में एक उसका स्केच और स्कीम और एक इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल बना होना चाहिए. देन यू शुड आल्सो इम्प्रूव योर रीडिंग. रीडिंग इज़ आल्सो पावरफुल इन गेटिंग द न्यू स्ट्रक्चर, न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस, न्यू मीनिंग्स, न्यू यूज. सो these both skills really very helpful for you as a student, as a learner, to learn the language, to improve the language, to store the language in the mind basically. So first of all, make a mindset of the language through receptive skills, and then becomes towards practice or output or productive skills. That is your speaking and then writing. So speak what you will speak, whatever you will have in your mind in the receptive skills, input process. आपने जो जहन में इनपुट प्रोसेस से लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को, वर्ड्स को बैठाया है, उसी को आपने स्पीक करना है, यूज़ करना है. ठीक है, जो किसी से सुना है लिसनिंग में, या पढ़ा है, रीड किया है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ठीक है, तो देन यू विल आल्सो ट्राई टू रिपीट द सेम इन स्पीकिंग प्रोसेस. So speaking will be very good. Communication skill will become more powerful if you are a good receiver, listener, as well as a good reader. Keep in mind this factor. Then comes the writing. After speaking improvement gradually, then you should write the same on the paper. We'll be able to write the same on the paper. So writing comes in the last. The foremost skill, which has the key importance, is the listening skill. Then the reading skill, through which you will make a language structure
and language bank, then you will be able to use in the form of speaking in the daily life, in the classroom, in the your discussions, as well as you will write the same on the paper as well. एक छोटी सी सीक्वेंस हमारा जो क्लासरूम्स के अंदर है, लर्निंग प्रोसेस में ये वी मेनली फोकस ऑन द राइटिंग। अब आपको पता चल गया कि क्या चीज़ है, वो प्रोडक्टिव स्किल है, लास्ट में है। जब तक आपका लिसनिंग रीडिंग स्ट्रांग नहीं होता और आप स्पीकिंग में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपका राइटिंग स्किल उतनी परफॉर्मेंस में नहीं आएगा। नेवर, you can't expect from your students class having a good creative writing. So इसलिए that's very important to keep in mind its sequence of learning the language. Then I think you will be very much in position to perform in the target language, whatever your language, in a better way. I think you got it, its importance, its sequence, and I hope you will adopt and practice and you will improve in the future. So thank you so much for your consultation and listening.